Hi children, let us start our discussion for the chromosomal basis of heredity. The theory is known as chromosomal theory of inheritance, and it was given by Walter Sutton and Theodore Boveri. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि मेंडल ने 3 laws दिए which are called as the laws of inheritance. What these laws are: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. So that we have discussed in detail, need not to revise again. Now come here. मेंडल ने जो भी काम किया वो उन्होंने 1865 में पब्लिश कर दिया, बट टिल 1900 उनको उनके काम का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला. And in 1900, 3 scientists were there. Who were they? They were De Vries, Correns, and von Schirmack. 3 scientists, they rediscovered Mendel's work, and उसके बाद उनके काम को recognition मिला. And this was very unfortunate that during his lifetime Mendel couldn't get the recognition of his work. The reasons, they were many. What the reasons you can count here, मैंने पहले videos में भी बताया. एक तो उन्होंने mathematics को bio में use किया for the first time, इसलिए भी लोगों को समझ में नहीं आया. सेकंड, मेंडल couldn't define variations, the changes in the genetic material, right? मेंडल ने जो यूनिट्स थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी ट्रांसमिशन के लिए कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनको फैक्टर्स बोला. यानी वो जीन्स को उस टाइम ज्यादा नहीं समझा पाए, जीन्स को उन्होंने फैक्टर्स बोला. एंड another point is, उस टाइम कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच इजी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही होगी. एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनके काम को उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल पाई. नाउ कम हियर. 1902 तक क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए. उसके बाद क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस में दिखा. एंड 1902 में फिर वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेने ने बताया कि actually the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes, and they used the chromosome movement to explain the Mendel's laws, right? So this is all about the chromosomal basis of heredity. आप इसको ऐसे समझो कि suppose this is the cell and inside the cell the nucleus is there, right? So inside the nucleus, the chromatin material, it is present, and this chromatin material, it is condensed to form the thread-like structures which are chromosomes. Actually chromosomes, they are the structures which divide at the time of cell division, right? So जब हम कहते हैं कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो सेम बिहेवियर जीन्स भी शो करेंगे, राइट? बिकॉज जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. दिस इज actually it is suggested by Walter Sutton and Theodore Boveri, because we know nowadays that the genes, they are present on chromosomes. अब आप 12th standard के student हो तो आप तो ये बताओगे कि genes are what? Genes are the segments of DNA, right? Genes are the segments of DNA which code for a protein. तो अब जबकि जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं तो क्रोमोसोम्स जो बिहेवियर शो करेंगे वही जीन्स करेंगे. एंड दिस वाज शोन बाय क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. नाउ ये जो है ये दूसरे डायग्राम से भी समझा जा सकता है, और हम एक टेबल के थ्रू क्रोमोसोम्स और जीन्स के बिहेवियर में सिमिलैरिटीज को जज कर सकते हैं. ओनली 3 or 4 पॉइंट्स आर देयर, एंड उन पॉइंट्स को देख के आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि व्हाट द सिमिलैरिटीज दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. सी, as you know, the organisms, they are
diploid in nature. Diploid having two set of chromosomes, right? You should be very clear with the term diploid and haploid. मैंने पहले भी आपको बताया, diploid is what? Where the double number of chromosomes they are there. We are having 23 pairs of chromosomes. Out of 23 pairs, 22 they are autosomes and one pair it is sex chromosome. So two n number of chromosomes we are having, and this condition is known as diploid, right? The paired structures these are. और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो गैमीट्स कहलाते हैं और उनको हम हेप्लॉइड बोलते हैं. हेप्लॉइड व्हाई? बिकॉज हेयर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट, एन यानी ऑल इन ऑल 23 पेयर्स मींस 46 क्रोमोसोम्स, और गैमीट्स में कितने होंगे? 23 होंगे ओनली. 46 डिवाइडेड बाय 23, सॉरी 2, तो आप बोलोगे 23. सो diploid organisms, right? So chromosome occur in pairs so as to genes. आप जब क्रॉस बनाते हो तो आप बनाते हो ना ऐसे, टी टी, ऐसे बनाते हो आप, टी टी इंटू स्मॉल टी. इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट? सो क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर्स, और जब जीन्स उन पे प्रेजेंट है तो सो एज टू जीन्स. सेकेंड, यू कैन से chromosomes they segregate at the time of gamete formation so as to genes. Genes also segregate at the time of gamete formation, and it is the segregation, you can say, which is responsible for the law of segregation which Mendel had stated, जिसकी वजह से हमने देखा कि रीअपियरेंस हुआ हिडन कैरेक्टर का इन F2 जनरेशन. सपोज दिस इज द F1 जनरेशन, और जब इन प्लांट को हमने क्रॉस किया तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में हमें क्या मिला? हमें ये 4 प्लांट्स मिले. This is because of the law of segregation, right? It shows law of segregation. So chromosomes segregate at the time of gamete formation so as to genes. And third point, which is important enough, children, that what you will write here, independent pairs of chromosomes. Independent pairs of chromosomes, they segregate independently of each other, right? And here you can say one pair segregates independently of another pair. So these points you can say here that they show the comparison between the behavior of chromosomes and genes. Let us see in a quick view. Here the chromosomes they occur in pairs so as to genes. Here the chromosomes they segregate at the time of gamete formation so as to genes. They segregate at the time of gamete formation, and here the independent pairs of chromosomes they segregate independently of each other, and here one pair segregates independently of another pair. और ये वाला जो point है, it is shown in this figure. This figure. You know, आपको पता है कि मियोसिस 1 में मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं और फिर वो they fall apart, right? In anaphase. So here you can see that in one case this orange it is going with the green, but it can go with the red as well. This is the another case because there is no restriction, right? Law of independent assortment, children. Here orange can go with green, but it can go with red as well. Same as for yellow. Yellow it is present with the red, but it can go with green. So दो possibilities यहाँ पर show की गई हैं और इसीलिए बताया गया है कि independent pairs they segregate independently of each other, and this is clear cut shown here by the two diagrams, right? Now ये मूवमेंट देखने में आप अपना सेल डिवीजन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का रिकॉल करिए और उसको उससे आपको समझ में आ जाएगा. सो हियर व्हाट वी आर
डिस्कसिंग दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जो बिहेवियर क्रोमोसोम्स शो करते हैं वो ही जीन्स शो करते हैं, और क्यों ना हम जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर से बता दें, बिकॉज जीन्स एक्ट दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, राइट? एंड this is all about the chromosomal theory of inheritance. Sutton and Boveri, they argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes. Let us write here, children, with another color, right? Pairing and separation of a pair of chromosomes. It leads to the segregation of a pair of factors. Factors means the genes, leads to the segregation of factors they carried, right? And this is all about the chromosomal theory of inheritance. I think आप समझ गए होंगे। अब देखिए, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, जिसमें बताया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर इट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स, एज क्रोमोसोम they contains genes are present on chromosomes. Genes are nothing but the segments of DNA. बट इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मॉर्गन ने, राइट? थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट लिया दैट वाज ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, राइट? एंड ये भी एक पॉइंट है कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को ही क्यों लिया गया, एंड इसके जो रीजंस हैं वो आप देखिए। एवरेज लाइफ स्पैन इट इज ऑफ अबाउट 2 weeks. Male and females, they can be distinguished easily. Variations, the changes, they can be seen by low power microscope, right? And the fourth reason, economic, easily cultured on synthetic medium. These are the reasons कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट के फॉर्म में लिया गया, राइट? सो हियर टीएच मॉर्गन experimentally proved the chromosomal theory of inheritance, and अगर एक क्विक व्यू में देखें कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो आप बताओगे कि एवरेज लाइफ स्पैन इट इज शॉर्ट, मेल एंड फीमेल दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड easily without any problem. Here the variations, the changes in the genetic material which can be seen by the naked eye as well, and also by the low power microscope, and easily culturable means they can be cultured on the synthetic medium. Not much efforts they are needed for the culturing of the Drosophila melanogaster. So here it is an advantageous insect for the showing of the authenticity of the chromosomal theory of inheritance, children. Now come here again, अगर मैं चाहूँ तो आपको बताऊं कि यहाँ पर इस चार्ट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट इज ओनली अ चार्ट वेयर द सेल डिविजन इज शोन। अब सेल डिविजन को दो पॉसिबिलिटी से शो किया जा रहा है, वेयर द इंडिपेंडेंट
pairs, they segregate independently of each other, right? And you can recall your chapter of cell division, children, of mitosis and meiosis. This is what? This is meiosis, right? And meiosis is what? It is the reduction division. That also, reduction division it is, where the chromosome number, they reduce to half. That is why called as. So यहाँ पर हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख ली. अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉग्निशन. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए. देखिए, मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है आपको पता है, जहां पर हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स देखते हैं, राइट? सो Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila only to study genes that were sex-linked. So यहाँ पर पहला point जो important है, that is dihybrid cross, where the two characters they are taken, and second the genes they are sex-linked. क्योंकि ये point ही reason है deviation from the Mendel ratio. How? आपको पता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशो 9:3:3:1 है, राइट? बट यहां पर क्या हुआ, व्हेन मॉर्गन क्रॉस्ड व्हाट वाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन sorry white eyed females, and here yellow bodied also, yellow bodied white eyed females to brown bodied red eyed males. You should remember this combination as well, children. Yellow bodied white eyed females to brown bodied red eyed males. Then the ratio should be 9:3:3:1. लेकिन रेशो डेविएट हो गया, and that is because of the linkage. किस तरह से डेविएट हुआ कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा दिखे. आप अगर रिकॉल करो 9:3:3:1 for the seed shape, right? Round and wrinkled and yellow and green color. तो आपको जैसे yellow and green, it is dominant over green, and round, it is dominant over wrinkled. सो आपको 9 जो है वो राउंड येलो मिले थे, उसके अलावा आपको 3 जो है राउंड ग्रीन मिले थे, येलो रिंकल्ड भी 3 मिले थे, और रिंकल्ड ग्रीन आपको एक मिला था. सो आपको न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले थे, राइट? यहाँ पे भी न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हैं, बट हेयर द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दे आर इन गुड नंबर. डेविएशन है रेशो में. द रीजन बिहाइंड हेयर द physical association between the genes, and it is only called as linkage, right? इस फिनोमिना को मॉर्गन ने कैसे बताया? उसने बताया that this is due to the physical association of genes, which is called as linkage. And linkage, it is present between the two genes which are present on the same chromosomes. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage, right? And linkage, it is present in between the genes present on the same chromosomes. और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. अब रिकॉम्बिनेशन को आप रिकॉल करो प्रोफेज फर्स्ट
ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, right? And it will go with this and it will go with this. So this is recombination, and this recombination, it is responsible for the appearance of the recombinants, the non-parental combinations. However, the number of parental types, it is much, and you can see here the percentage. 98.7% it is for the parental types, and 1.3% it is for the recombinant types, right? So this is the point for linkage and recombination. And जितना टफ ये टर्म लग रहा है उतना टफ है नहीं यहाँ पर। अगर आप इजी वे में ये देखना चाहो तो जो क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन के वजह से दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर इन द अपकमिंग जनरेशंस, और उसी वजह से उनका नंबर ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा क्यों है, बिकॉज जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर फिजिकली लिंक्ड, उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन है, एंड वो एक साथ ही फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, एंड दिस इज नथिंग बट द लिंकेज ओनली। लिंकेज इज डिफाइंड एज द फिजिकल एसोसिएशन between the genes present on the same chromosomes। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको फिर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्यों मिलते हैं, जिन्हें आप रिकॉम्बिनेंस भी कह सकते हो, दैट इज ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इट occurs between the non-sister chromatids in the prophase first of meiosis first in the cell division, right? So here अब लिंकेज और रिकॉग्निशन हमने देख लिया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें भी एक पॉइंट और है, टाइटली लिंक्ड जीन्स एंड लूजली लिंक्ड जीन्स। यहां पर आप देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि जो व्हाइट और येलो जीन्स है दे आर टाइटली लिंक्ड इन कंपैरिजन टू व्हाइट एंड मिनिएचर विंग जीन्स, राइट? एंड यहां पर जो लूजली लिंक्ड जीन्स है उस केस में रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज बढ़ गया, right? However, the parental combinations they are still more, but यहाँ पर दो केसेस जो है वो डेविएट हो गए, टाइटली लिंक्ड एंड लूजली लिंक्ड, राइट? यहाँ पर आप देखो कि जो व्हाइट एंड येलो जीन्स हैं यहाँ पर दे आर टाइटली लिंक्ड, यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, right? And that is why the parental combination it is far more 98% than the non-parental. यहाँ पर white and miniature that is loosely linked, you can see here the distance, and that is why the non-parental combinations which is also called as recombinants it is increased by, here you can see the percentage 37.2, here the parental they are 62.8। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, राइट? 98.7 एंड यहाँ पर 62.8। रीजन, रीजन the distance between the genes, tightly packed linked and the loosely linked genes. So that is also a point here which you should know, and you can give the example of here for the tight that is yellow and white and miniature। अब देखिए एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे कॉल्ड एज अल्फ्रेड स्टर्ट इवेंट, and Alfred Stuart event, he used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosomes. So the frequency of recombination, right? The frequency of recombination between the genes present on the same chromosomes, he used the frequency for gene mapping. Important point it is.
Don't get confused. The frequency of recombination of the genes present on the same chromosomes, right? And he used them for the gene mapping, and it is widely used in the Human Genome Project and all. So ये चीज़ भी एक important है. The frequency of recombination between gene pairs of the same chromosomes on the same chromosomes, he used it as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. So that point is also important here, and it is like the gene mapping nowadays, it is extensively used as a starting point in the sequencing of the genomes. तो मुझे लगता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भी आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. आई कैन ट्राई टू अपलोड एन इजी डायग्राम फॉर यू इफ यू रिक्वायर, and let us discuss in a quick view for the crossing over and linkage. Crossing over, which is the exchange of segments between the non-sister chromatids children, right? That causes variation. And this synapses, which is written here, it is nothing but the pairing of homologous chromosomes. ये सारे टर्म्स जो है ना, ये सेल डिवीजन के हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द क्रोमोसोम्स which are equal in shape and size, and each chromosome, it one comes from father and one comes from mother, and they get paired, which is called as synapses, right? So the pairing of the homologous chromosome, it is called as synapses, and crossing over between the changes of the segment, the exchange of segment between the non-sister chromatid, it actually provides the variation. And this X-shaped structure where the exchange takes place, this X-shaped structure where the exchange takes place, which is known as chiasmata. So crossing over, it is the exchange of segments of non-sister chromatid. Chromatids, what they are, they are the splitting. A chromosome, it is splitted into two chromatids. These are, this is one chromosome and these are two chromatids. And this is another chromosome. So this chromatid and this chromatid, it can be called as non-sister chromatid. These are sister chromatid and these are non-sister chromatids where the exchange of genetic material takes place. So you can see your chapter for cell division in 11th standard, and this X-shaped structure which is formed at the time of exchange, it is called as chiasmata. So synapses, it increases genetic variability, and linkage is nothing but the physical association which leads to the failure of the two genes to assort independently. That is why the deviation occurs, right, from the Mendelian dihybrid ratio, that is 9 is to 3 is to 3 is to 1. So deviation which occurs due to the physical association of the genes present on the same chromosome, it is called as linkage. Linkage occurs when two genes are close to each other on the same chromosome, and genes far apart on the same chromosome, they assort independently. They are not linked. And linkage, it is based on the frequency of crossing over between the two genes. So that you can say, and I think you understand what uh, we have discussed here. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा. एंड टिल देन, हैव अ वेरी गुड बाय.